Mehdi Alimat Bari, how are you? Hello Preeti, how are you? Thank you so much, guys. Perfect. Oh, one of my favorites. Yes, our guest Dr. Naweed Syed is here, and of course my co-host Salma ji is here too. Hello Anjana Sharma. Hello to Dr. Naweed Syed. Anjana Sharma. Hello. Yes, he's here. We are happy to see him here. Yes, thank you so much. Thank you so much, Anjana ji. जी अमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो गए जी अभी. We love your comments all, each and every time. Thank you so much. Hello Neelam. Yeah, we are over 2000 की गज़लें माशाल्लाह. क्या मजा आया. वो है मेरे चैनल पे ही है, आपको Jalal.com पे जाइए. और फिर लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे we want to see more of those kind of shows. I said yeah, we will bring every often because एक दो थोड़ा serious guest हम ले आते हैं. फिर इसके बाद हम एक दफा हमने शायरी का प्रोग्राम रखा था. आप अब्दुल को तो जानते हैं, तो अब्दुल और रिश्तेदार हैं दोनों की काइंड ऑफ बहुत मजा आया था उसमें भी. जी नवीद भाई, आपको ये हमारे क्या बोलते हैं ये जो अहमद नदीम साहब आपको सलाम कह रहे हैं. He's कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इज डाउन टू अर्थ पर्सन. यस, वी नो दैट. Thank you, very kind. He's कह रहे हैं डॉक्टर साहब इज डाउन टू अर्थ पर्सन. यस, वी नो दैट. Thank you, very kind. Probably don't know why I was awarded Canada 150. Oh, you got 150? MashaAllah. Yes. Yeah, that's what I was going to ask you in one of the questions. What is the new award? This has been really great year. Everybody money, the Pakistan gave me Tamgha-e-Imtiaz this year. Yeah, that's right. Now my adopted mother. Yeah, yeah. वो आपका आज का नोट देखा तो मैंने. वेरी गुड. Very humbling. हेलो नाज़नीन, थैंक यू सो मच. चले जी हाँ, सलाम नमस्ते. जी हाँ, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, यानी मदद. मैं आपका होस्ट जलाल आपकी खिदमत में हाजिर. आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं. जी हाँ, सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो संगम इन कैलगरी. अगर आप एडमिंटन में हैं तो रेडियो संगम इन एडमिंटन, और जो हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं या तो पर जो हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं गाइस, थैंक यू सो मच. और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर. सलमा जी, आप क्या कहेंगी? जी जलाल, मेरे ख्याल से मेरा माइक आपने जान के बंद किया. यस, आपने वो एनी नोट कर लिया? जी बिल्कुल नोट कर लिया. गो अहेड. तो सबसे पहले हमारे सारे सुनने वालों और देखने वालों को बहुत ज़्यादा नया साल मुबारक हो. अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए और आपकी सब मुश्किलें आसान हों, आपकी सब तकलीफ़ें दूर हों और आप सेहतमंद रहें, अपने प्यार करने वालों के साथ अच्छा साल गुजारें. और हमारी यही दुआ है आप सब लोगों के लिए. और आप प्लीज़ हमें अपना फीडबैक देते रहिए कि आप हमसे क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं. तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें बताइए ताकि हम उसी तरीके के प्रोग्राम आपके लिए लाते रहें. तो आपको सबसे पहले सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, यानी मदद, एंड गुड इवनिंग एवरीवन. एंड इट्स अगेन नाइस, our pleasure to be back here, and the weather is
now taking into a good side. और काफी हमने सर्दी खाई, लेकिन it's really gotten better now and अच्छा लगा आज बाहर निकल के। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, जाके एक अच्छा सा कॉफ़ी का कप बना ले जैसे मैं बना के लाई हूँ और कॉफ़ी पीजिए और कुछ नट्स वगैरह खाइए और हमारा पूरा प्रोग्राम देखिए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। जी जी। और अपना सलमा जी, हम जो है अपना न्यू ईयर्स ईव को मेरा यानी कि हमारी टीम जो है जी वो अपना मैग्नोलिया हॉल गई थी, वहाँ पे न्यू ईयर्स ईव का जो है अपने इवेंट के लिए। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। जी हाँ, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था, बड़ा इनफॉर्मल था and there was no गड़बड़ and there was everybody was enjoying, अच्छे डांसेस थे, अच्छा स्किट था, बहुत अच्छा प्रोग्राम जी जी। और जो हमारे जो दोस्त हैं मैग्नोलिया हॉल वाले, जिसमें शिमी जिसमें जी अपना जो जिमी भी हैं और जी प्रिया वर्मानी और संगीता वर्मानी, थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज लॉट्स ऑफ फन, इट वाज अ गुड फूड, वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी एंड इंशाल्लाह विल डू इट अगेन नेक्स्ट ईयर। और हमारी जो हमारी दूसरी फ्रेंड है लता जी, उनकी जो निर्वाणा होटल अपना निर्वाणा रेस्टोरेंट में थी, तो वहाँ भी मैंने सुना बहुत अच्छी यानी पार्टी गई थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ द इवेंट्स, आई थिंक यू गाइस डिड आई मीन ऑसम जॉब। तो अपना सलमा जी, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? जी मैं बिल्कुल स्टार्ट करूँगी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनका इंट्रोडक्शन कराना तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। सारी कैलगरी क्या, सारा कनाडा, सारी दुनिया इनको बहुत अच्छे से जानती है और हम इनको अपने टीवी सेक्शन में बुला चुके हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा आज हमारे साथ ये रेडियो पर हैं, तो हम इनसे काफ़ी अच्छी और मज़ेदार बातें करेंगे इनके प्रोफेशन के बारे में, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में और इनसे इनके बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे। तो डॉक्टर नवीद सैयद, आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले और अस्सलाम वालेकुम यहाँ आने का। और आप आए, इस वेदर माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन फिर भी इस वक्त निकलने का होता है कि जाएं कि ना जाएं, तो आप तशरीफ़ लेकर आए हमारे स्टूडियो में, हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। तो कहिए आप कैसे हैं और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे हम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को, आपके देखने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि आपने कहा कि आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए, यहाँ तक यहाँ आने का है, आप दो ऐसे जलाल भाई हैं और आप ऐसी हैं कि आपके लिए तो इंसान कब्र से भी निकलता है। अरे क्या बात कही आपने, क्या बात कही, शुक्रिया। आप लोगों का मोहब्बत, आप लोगों का खुलूस, आप लोगों की जो रेपुटेशन है में, वो इतना अच्छा है कि हमारी एफर्ट्स तो उसमें कोई नहीं है। यहाँ के दिली खुशी भी हुई और मैं आपको बहुत बहुत अगेन आपके कामयाब प्रोग्राम पे भी मुबारकबाद देता हूँ। It's really one of the most watched indeed program now in Calgary. So keep up the good work. Thank you so much. Thank you so much. Please. तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आप कनाडा कब आए, किस तरह से आप तशरीफ लेकर आए और आपका बैकग्राउंड क्या है, आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, मैंने इंग्लैंड से PhD की थी 1988 के आखिर में जी, और फिर छुट्टियों में कुछ अरसे के लिए मैं पाकिस्तान और मिडल ईस्ट चला गया, मेरे इन-लॉज वहाँ रहते थे। तो उसके बाद से जब कैलगरी आया हूँ तो वो अक्टूबर नवंबर का ज़माना था। अच्छा। और उस ज़माने में तो आपको मालूम है कितनी सर्दी हुआ जी जी। तो जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पे लैंड किया हूँ तो उस वक्त -53 विंड चिल के साथ टेम्परेचर। तो मैं ये समझा कि यहाँ पे जो है वो आज काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों की इतनी मोहब्बत, प्यार और इतनी वार्म जो थी, जिसकी वजह से और फिर ये कि शहर में उस ज़माने में नया विंटर ओलंपिक होके हटे थे, तो काफ़ी एक बज़ था इस सिटी में। और उसी साल फिर कैलगरी फ्लेम्स जो है वो स्टैनली कप जीते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद से एक ऐसी अच्छी यादें वाबस्ता हो गई शहर से। वो कहते हैं कि अंदर वो नफरतें थी कि बाहर के हो गए, तो जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए। उस वक्त से फिर यहीं पे हूँ, यही घर है, यही हमारी फैमिली है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है कि यहाँ जो हमारी तमाम मुख्तलिफ एज सब कॉन्टिनेंट की जो फैमिलीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनमें मोहब्बत, भाईचारा, प्यार इतना है कि हमें महसूस नहीं होता कि हम इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं। सो
इस वजह से जो वो कमी महसूस करता है अपने वतन की, वो लोगों ने यहाँ पे पूरी करना है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो आपने जब पीएचडी किया वहाँ से इंग्लैंड से, तो फिर आपने क्या सोचा कि मैं क्यों कनाडा जा रहा हूँ, मैं वहाँ क्या करूँगा? तो आप क्या सोच रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यानी ऑलमोस्ट करियर के एंड पे आ गया। मैंने कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। अच्छा। तो मैं इंग्लैंड में एक दफ़ा मीटिंग थी वहाँ पे, तो मैं अपनी टॉक दे रहा था। तो मैंने जैसे ही अपनी टॉक फिनिश की तो प्रोफेसर कैन लोकोविया जो यहाँ पे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट थे, वो भाग के आया, कहने लगा हमारे साथ काम करोगे? ओहो वाह। तो मैंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? कहने लगे कैलगरी। तो मैंने कहा ये कैलगरी कहाँ है? तो कहने लगा तुम्हें याद है इस साल विंटर ओलंपिक्स जो हुए थे, वो जो होने वाले हैं वो कैलगरी में। तो मैंने सोचा कि जिस शहर में विंटर के ओलंपिक्स हो सकते हो वो इतना बुरा कोई बात जरूर होगी। तो मैंने उससे हाँ कर दी। हालांकि मेरे पास इंग्लैंड में, लंदन में बहुत अच्छी जॉब्स थी, कार्डिफ में बहुत अच्छी जॉब्स थी। अच्छा। बस वो कहते हैं कि तकदीर आपको जहाँ ले जाती है, आपको किसी भी तरह से चले जाता है इंसान। तो यहाँ आने के बाद सोचा था कि 2 साल में चले जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने मेजर डिस्कवरीज की 2 साल में। तो अक्सर हमें लोग चिप के वर्क काम से याद करते हैं, लेकिन हमारी 17 ऐसी मेजर डिस्कवरीज हैं कि जिनको न्यूरोसाइंस की दुनिया में जो है वो कहा जाता था कि these are the breakthroughs of the decades of the brain। तो वो जब काम हुआ तो उसके बाद से मुझे यूएस से बहुत सी जॉब्स की ऑफर आई। अच्छा। तो येल यूनिवर्सिटी ने तो अपना चार्टर्ड जहाज भेज के मुझे फ्लाई किया। तो लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटी ने कहा कि तुम्हें जाने नहीं जा नहीं सकते। तो मैंने कहा कि मैं तो यहाँ सिर्फ विजिट वीज़ा पे हूँ, मैं तो यहाँ कोई जॉब परमानेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि इसकी तुम फिक्र नहीं करो। तो विद इन 2 वीक्स मेरे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने एक्सपेडाइट किए, और मैंने उनसे कहा था कि मैं 3 साल से ज़्यादा की फेलोशिप नहीं करूँगा। अच्छा। तो अभी उसमें 2 दिन ही बाकी थे कि उन्होंने पेपर्स मुझे हैंड किए, कहा कि ये बॉर्डर से जाके चक्कर लगा के आओ, स्टैंप लगा लो। उस ज़माने में दिन अच्छे हुआ करते थे। तो मैं जैसे ही वापस आया और मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिए, तो मैंने आई स्टार्टेड माई जॉब हियर। और उसके बाद से कुछ ऐसा करम रहा है अल्लाह का कि तमाम मुश्किलें खुद ब खुद से आसान होती चली गई। So I was appointed at the leadership role as well for many years. So this has been home since then. माशाल्लाह से। तो आप जो बता रहे हैं अपनी 17 जो आपकी डिस्कवरीज थी, तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा बिल्कुल उसकी टच करके थोड़ा बताएंगे, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो आप किस बात की बात कर रहे हैं। जी, हमने 1990 में यानी आपके दिमाग में कुछ नेटवर्क्स हैं ब्रेन सेल्स के जो स्पॉन्टेनियसली एक्टिव होते हैं जी। जो जैसे आपका हार्ट का रिदम है, आप सो भी जाएं तो वो काम करता रहता है। सही बात है। इसी तरह से आपकी जो सांस लेने का अमल है वो भी काम करता रहता है जी। तो इसके लिए एक ऑटोमेटिक नेटवर्क है जो बगैर जहन को सोचे हुए चलता रहता है। हमारी टीम दुनिया में पहली थी जिसने उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जो अभी तक नहीं किया था जी। किसी को उसके बारे में इल्म नहीं था। फिर हमने उस नेटवर्क्स को एनिमल मॉडल्स में हमने निकाल के कल्चर में ग्रो किया। और हमने सिर्फ 3 सेल्स के जरिए से ये साबित कर दिया कि ये नेटवर्क स्पॉन्टेनियसली एक्टिव होता है। अच्छा। और ये सांस के अमल को कंट्रोल करता है। तो उसमें यह कि हमने फिर उसकी बताया कि किस तरह से ये नेटवर्क ऑपरेट करता है, इनकी आपस में तालमेल, इनकी इंटरेक्शंस कैसे होते हैं। और फिर यही रिसर्च 17 साल के बाद इंसानों में जाके लोगों ने उसको खोज लगाया और वो उस वक्त उस पर भी साबित हुई। तो ये कहलाता था कि it's actually the breakthrough of the decade of the brain to be able to find a network in the brain that controls spontaneously occurring rhythmic behaviors। जैसे आपका चलने का अमल है, ये आप सोचती नहीं है
आप चलना शुरू ऑटोमेटिक है, कार्डियक रिदम है। इसी तरह से जानवरों में जो चबाने का खाने का अमल है, तो ये रिदमिकल बिहेवियर होते थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये किस तरह से रिदम को जनरेट करते हैं। तो हमारी टीम पहली थी जिसने ये साबित किया। इसी तरह से लोगों ने सोचा कि अगर ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उसमें अगर क्या ब्रेन सेल ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। तो हमारी टीम वाज आल्सो द फर्स्ट इन द वर्ल्ड कि जिसने ये साबित किया था कि आप एक जानवर से दूसरे जानवर में ब्रेन सेल्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा। और ये ट्रांसप्लांटेड न्यूरॉन्स जो ब्रेन सेल्स हैं ना सिर्फ होस्ट के सर्किट में इंटीग्रेट हो जाते हैं, बल्कि वो जो खोया हुआ रिदम है उसको भी वो शुरू कर देते हैं दोबारा। So that was published in Neuron, which is one of the top journals, and it was also on the cover of that journal as well. हमारा पहला पेपर साइंस में, आपको मालूम है कि नोबेल प्राइज के अक्सर पेपर इन्हीं जर्नल्स में शाया होते हैं। So similarly, we were also the first team to show how brain cells connect with one another, how they establish networks, and how these networks are modulated to generate plasticity, which forms the basis for learning and memory. So memory के भी जो center थे वो भी हम लोगों ने locate किया था। तो इसी तरह से यानी बहुत से ऐसे steps है, लेकिन ये कि क्योंकि चिप की वजह से लोग एक्साइटेड बहुत हो जाते हैं। जी, जब चिप का नाम $6 million मैन इसी के तरह का एहसास होता है। तो लोग हैं उसी के बारे में ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारी रिसर्च अभी अल्हम्दुलिल्लाह we have a paper that will really rock the world of neuroscience. Is that right? We have identified a gene that may be involved in Alzheimer's disease. Oh my God, that is the best thing. You know, is this a breaking news? This It will be breaking news. Is it? It is? Wow. Wow. Like, you know, the only disease I'm scared of. Yeah, it's Alzheimer's, It's right? No Alzheimer's. doubt. I'm ready to die of any disease. But इसमें जो आप मेरे चचा, very young, he was a principal in Karachi for the dental medical school, and brilliant person. And I don't know, he got early Alzheimer's. The doctor said that he got it very early, a rare one, very rare one. And they wanted to do research on him, which my chachi didn't accept it. She couldn't take it, that he's becoming like a research person. And in his late 50s, early 60s, he got it. And the way he went down, no dignity was left, nothing. Like when and he was the most humorous person you have ever met. He was like that. And then you see him, he became quiet, he didn't know what was happening. And I said, no, this is the worst thing when that person doesn't know what he's doing, what is happening. And the things I found out, I said, no, this is the worst thing. And now you are telling that you have discovered something. Oh my God, this is the best thing you have told us today. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि आपको वो पेशेंट रिस्पॉन्सिव नहीं होता, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा तूफान बहा है जो शॉर्ट सर्किट होता रहता है कि थोड़ी सी फ्रैगमेंट्स आते हैं मेमोरी की। तो अभी हमारे 8-10 डिपार्टमेंट हेड्स बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे थे कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर का सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि लोग अब लंबी उम्रें गुजारने लगे हैं, जिसकी वजह से उनको ये ओल्ड एज की बीमारियां लग जाती हैं। तो मैंने कहा कि हमें कोई इसकी फिक्र नहीं है, हमारे यहाँ ये बीमारियां नहीं होती। तो वो हैरान हुए, कहने कि क्या तुम लोग क्या खाते हो? तो मैंने कहा हम लोग खाते तो निहारी पाए हैं। तो कहने लगे इसकी क्या फायदा? मैंने कहा इसकी ये होता है कि हम कभी 50 से ऊपर जाते ही नहीं। सही बात। तो उससे पहले ही हमारा काम खत्म हो जाता है, इसलिए हमको वो डिजीज होती नहीं। लेकिन ये कि देखिए ये ऐसी डिजीज है कि लॉस ऑफ मेमोरी शॉर्ट टर्म, माँ जो है अपने बेटे को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, भाई को रिकॉग्नाइज नहीं करता। So it's really terrible. So we were very lucky to actually find a gene that people thought controlled cancer. But it turns out that that gene regulates same areas of the brain where your memory is formed and consolidated and retrieved.
So we will be getting soon close to 80 some brains from US. अच्छा. Wow. And these are brains for people who have Alzheimer's or had died of Alzheimer's. But now really the idea is that once we can figure out where and how this gene is malfunctioning, we should be able to actually go and repair. Wow. So we are very excited about it. So how many people minimum or maximum you have to have in your team? Like there is any number, or you can have more or less, or how many, like when you say art, when you're saying all the time our team and these, so what is the maximum or minimum number you have in your team? So I think to have an effective lab that you can manage. लोग तो आप रख लें जितने भी, लेकिन ये कि आपकी कोशिश होती है कि आप due attention तमाम trainees को दें. तो इसी साल एक साल के ही अरसे में I have graduated 5 PhDs. So when they leave, you have to fill that gap and then the knowledge pool. So when you bring in new people, they get trained. So normally between 10 and 15. 10 to 15 people. That really makes a healthy team that can work together. If there are more people, then it's like more factory and you can't pay more attention. So you know, like यानी कि अभी आपने जैसे कहा कि आपके पास जो 17 डिस्कवरीज आपने की है, तो you know, तो वो जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन जो है डिस्कवरी एंड until you get to the media, तो उसमें जो है आपका क्या जॉब होता है? Of course you want to make sure कि उसको जो मिला है डिस्कवरी, that's the right thing, or the way you are thinking that you know that's what it is. So then you can go फिर आप जाके मीडिया में बोलते हो कि ऐसा नहीं किया है, तो वो पीरियड में आपका क्या जॉब होता है? Like what do you do between that period? देखिए शुरू ही प्रोजेक्ट में जो लैब का प्रोफेसर होता है, जो लैब का वो CEO समझ ले होता है, they come up with the ideas and then they write a grant to government which is highly competitive, 10 to 15% success rate across the nation. Wow. And then once you get your funding, now the projects are spelled out within that grant. Okay. So आप जब उस पे काम करते हैं 3-4 साल के बाद, you actually produce one decent paper. Wow. But when you produce that paper, this paper now needs to go to world experts. So the editor of the journal and the editorial board, they first screen. तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वर्दी है या नहीं है, will it really make the test of the time? Then they send it out to experts around the world. And then they recommend whether this paper should be published with changes or rejected right away. Wow. So वो फिर 2 महीने उसमें और लगते हैं पूरे process में, evaluation में. Then it takes maybe 1 and 2 months for you to make changes if they are small. And then it goes back. So it takes really 6 months for a paper from its submission to when it appears in the journal. And then it's in the public domain, right? So उसके बाद जो वो पेपर की आपको acceptance आ जाती है और publication की date आ जाती है, तो then university coordinates a press release. Okay. So the day the paper appears in the journal, it goes out into media. So the media then are there really trying to pick up the story. So then, you know, like of course, then you are in the picture most of the time कि भाई ऐसा. तो आप में जो यानी आपकी जो team है, of course when you guys are together, तो आपको फिर कैसा feel होता है वो, you know, yes we found something. Well, it's science is an interesting business. Right. Really, no doubt. आप अपनी मेहनत से, लगन से, नेक नियति से कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, जो नेचर की जो सीक्रेट्स हैं उनको रिवील करने की कोशिश में लगे रहते हैं, नियत अच्छी हो तो एक दिन आपको नेचर ऐसे करके झलक दिखाती है. Is that what you're looking for? And then it closes, and that moment you are touched by an angel. It's something to die for, right? No doubt. So the feeling that you actually get is unbelievable. You have created new knowledge that no one in the world knew before this, right? And this may really change the shape of human life, civilization, healthcare. So that sense of feeling, and more importantly, I think when you're trainees, when they make a major breakthrough, आपको जो है ना, nothing gives you greater pleasure than to see people who stood on your shoulders. They see much further than you did in your time. So उसमें ये कि then you live vicariously in them
forever. Yes. They make you immortal. Yes, no So doubt. actually, you know, these discoveries bring you immortality. Yes. Not money can buy this, no other nothing can things buy. can buy this, but the sense that you have actually unraveled the secret Yeah. that Yes. was contained for billions of years, No doubt. right? No, That's wow. And so I think that itself is a tremendous satisfaction and reward. Yeah. And so you feel like you're walking on water. Oh, what a feeling! What a feeling, can you imagine? Isn't it? Oh, nice, yeah. So आप थोड़ा सा हमारे सुनने वालों और देखने वालों को tell us something about that chip, so that you know, like we had posted your picture actually with the chip in your hand. आपका ये बड़ा फेमस पिक्चर है हाँ, बड़ा अच्छा है। तो जरा हमारे इनको बताएंगे So थोड़ा that उसके picture बारे में। actually is reflective of Yeah. a window Okay. between outside world into And the the inside inside. world. Okay. So I think since you mentioned that picture, I will start with this. Yeah, so sure. people who have retinal damage, they Yeah. cannot see, they're blind Yeah. or partially blind. Yeah. What we plan to do with this chip is that if this chip is planted in your retina Right. inside Yeah. and then connected to your optic nerve, which Yeah. takes the message to your brain. Yeah. तो अगर आपने चश्मे के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, जैसे जलाल भाई ने कैमरे लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो ये जो आउटसाइड की इमेज है इसको लेकर उस रेटिना पे जो चिप है Yeah. उस पे प्रोजेक्ट करते हैं. जब ये उस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये वहाँ से इमेज can actually go to your brain, जी. right? जी. But because chip generates lots of heat, so what you do, you power it through that very camera which is on both sides of your glasses. Okay. So it's a small little camera. When you take it off, you can't see anything. Okay. But the moment you put your glasses on, Yeah. this camera will not only power the chip, Yeah. so it doesn't generate heat, but it But also projects the project image, the images, so you yeah. can really see this. Oh, So the my- idea यही था कि अगर आपका brain damage हो जाता है, जी. चाहे वो stroke है, trauma है, injury, accident है, Parkinson's है, Alzheimer's है, इसकी natural replacement damage brain tissue की कभी नहीं होती. अच्छा. And if you are left with the loss of function, that's what the loss of function will be. Mhm. Because you have too many brain cells, they try to help out the missing link, Mhm. but never completely. जी. So what happens in that case is that you are really then devoid of that function. Mhm. और इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते. आपकी स्किन कट हो जाती है तो आप उसको रिपेयर कर लेते हैं. अगर आपकी blood loss हो गया तो you can repair it. But if your brain cell is damaged, it's damaged for good. Mhm. So हमने कहा कि there is no treatment. Mhm. Can we somehow make computer chips, a semiconductor chip, which can act as a lost brain tissue? And then if we marry them together, just like, we are natural cyborg, Yeah. Jalal Bhai right now, he's connected with the world Yeah. with many gadgets. Yeah. So we normally connect with these devices. Okay. But can we actually make a direct contact? Okay. तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, तुम लोग पागल हो गए हो, हाँ. अभी तो जस्टिन ट्रूडो का दौर भी नहीं आया, तुम लोगों ने marijuana शुरू कर Yeah, दिया. yeah, that's true. So we said we have to do, we have no choice. Mhm. So हमने फिर वो पहली जो semiconductor chip थी, we developed in partnership with German institute, Okay. Max Planck Institute, क्योंकि कनाडा में वो चिप नहीं बन सकती थी. अच्छा. तो वो हमने पहली मर्तबा दुनिया में for the first time showed actually that it is possible to have direct link between brain cells, direct contact, and a machine, Wow. whereby machine or a chip can talk to your brain and then brain can talk back. Wow. अच्छा ये तो था, it was really a milestone because for any brain control prosthetic device, Mhm. you need to have that two-way communication. Okay. अब जैसे देखिए कि ऐसे लोग हैं जिनको पार्किंसंस है, Mhm. they have very bad tremors. Yeah. जब दवा भी काम नहीं करती तो सर्जन जाके डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट करता है. जी. तो ये पेशेंट बटन दबाता है तो वो इलेक्ट्रोड जो है वो करंट जनरेट करके जो बचे कुचे ब्रेन सेल्स हैं उनको फोर्स करता है कि वो अपने मैसेंजर्स ट्रांसमिटर्स को रिलीज करें. लेकिन वो ब्रेन सेल्स वो फायर करते हैं मगर वो चीख रहे हैं, भाई बस करो, भाई बस करो, भाई बस करो, लेकिन उनकी बात को सुनने वाला नहीं, क्योंकि ये मोनोलॉग है.
ओके इसी तरह से जिनको एपिलेप्सी होती है, जी इलेक्ट्रोड्स आप माउंट करके डिटेक्ट कर लेते हैं कि इनको सीजर होने वाला है, सही बट देयर इज नथिंग यू कैन डू। या तो हमने जो किया है उसमें यह था कि टू वे लिंक था। अच्छा तो ब्रेन सेल्स जो है वो चिप से बात करते हैं और चिप फिर ब्रेन सेल से बात करते हैं, and that is really what we think was a major step, and since then now we have developed a number of other chips and we are actually ready to go yeah live. yeah so I was going to ask you, that was my second question. So for how many diseases have you or one chip works for all these diseases, or you have to have separate chips for the separate diseases? That's a great question. So you Okay. actually have to have separate chips for talking to particular brain cells. आपको Okay. मिसाल दूं कि हम लोग अभी एप्पल आईफोन के साथ नेगोशिएशन कर रहे जी। हैं अच्छा कि उसमें हमारा एक कॉक्लियर इम्प्लांट होगा। जी तो जिनको सीजर्स होते हैं, जैसे ही सीजर होने लगेगा ओ अच्छा वो फौरन ही आपके सेल फोन को डायल डायल करेगा, कर वाह। yeah. आपसे कहेगा कि नवीद तुझे सीजर होने वाला है, बैठ जा। Oh, और wow. मैंने तुम्हारा जीपीएस लोकेटर ऑन करके 911 कॉल कर दी है और एम्बुलेंस वाले को पता है तुम एग्जैक्टली वाह। कहाँ पे हो। और मैंने तुम्हारी बीवी को भी फोन कर दिया, उससे कहा कि इंश्योरेंस के पेपर निकाल लो, यू आर रिचर देन यू थिंक। So really the idea is that Wow. have these technologies first in practice because they are non-invasive. yeah आपको उसमें ब्रेन में जाना, काटना Yeah. और उसको इम्प्लांट करना नहीं है। yeah तो हमारी अब कोशिश यही है कि क्योंकि आप जब ब्रेन में डीप जाके कोई चीज़ इम्प्लांट करते हैं तो आप नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करते हुए जाते हैं। yeah तो वो डैमेज होने का मकसद ये है कि वो फंक्शन तो लॉस हो ही हो ही गया, जाए आपका टेस्ट चला गया, आपकी स्मेल चली गई, जी, आपका विजन चला गया। जी तो हम लोगों ने अब जो नई चिप्स जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इट्स अबाउट टू बी पब्लिश्ड, okay that chip allows us to be able to record activity actually when sitting subcortically outside. outside उसकी okay सेंसिटिविटी इतनी है कि अगर आपको जैसे ही जो है वो जलाल भाई को गुलाब जामुन बेगम मना करती हैं गुलाब कि ना जामुन, खाओ जी, लेकिन दिल हो रहा है दिल हो रहा है हाँ। बहुत, चले गुलाब जामुन तो अच्छी चीज़ है लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसी एडिक्शन है जी जी तो उसमें यह है कि वो जैसे ही वो एडिक्टिव एरिया आपके ब्रेन के जब सेल्स फायर करते हैं ना जी तो उनका एक खास अंदाज है फायर करने का, एक ओह। खास नंबर है। ओके तो जो चिप है वो सिर्फ उसी नंबर को रिस्पॉन्ड करेगी, जैसे आपका सेल फोन है, जी सबके पास सेल फोन है जी लेकिन आपको कोई भी 6, 8, 10 डिजिट नंबर से ट्रेस कर सकता है, हाँ हाँ लेकिन जब आपका नंबर आएगा कॉल तो आपके नंबर पे आएगी ओके और सिर्फ आप ही गुफ्तगू करेंगे। जी तो इसी तरह से ब्रेन के वो एरियाज जहाँ पे इस किस्म की क्रेविंग होती है, जब वो फायर करेंगे तो चिप को हमने प्रोग्राम किया हुआ है कि तुमने उसी वक्त जागना है जब वो सेल्स तुम फायर कर रहे फायर हो कर रहे हैं और तुम उसी फ्रीक्वेंसी पे लॉक इन करके उनसे कहो कि बच्चों काम calm down yeah no need to Oh. get panic. वाह। So you can control pain, you can control these addictions, you can also obsessive compulsive behaviors, ADHD, yeah and also symptoms of autism spectrum that you can control subcortically. तो ये जो है हम इसमें बहुत ही excited हैं। तो आप I'm sorry मैं थोड़ी मेडिकली साइड पे जा रही हूँ Yes. तो अब देखिए ये चिप तो आपने कर लिया डिस्कवर, नाउ आई नो एवरीथिंग हैज गॉट a price to it, right? It is expensive. So how expensive and how affordable it is that people will be able to afford it to get this subcortically put in? Yeah, so that's again a great question. अब देखिए कि मुझे याद है कि जब मैंने पहले अपना एप्पल का कंप्यूटर लिया था जी तो वो 2 मेगाबाइट की उसकी हार्ड Yeah. ड्राइव थी राइट और वो मैंने $13,000 का लिया सही था, बात राइट। हाँ। अब आपको जब आप जाते हैं प्रसाद के लिए या नजर Yeah. के लिए तबर्रुक के लिए Yeah. आपको 8 गीगाबाइट Yeah. की जो है ना लोग वो फ्री में बांटते Free में रहते हैं। बांटते Yes. रहते हैं। सो शुरू में टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होती है जी but as it's Going to get it more is more common. advanced हाँ, and more yeah. production की Yeah. facility हो जाए then it becomes cheap। पर Yeah. लेकिन हम लोगों को जो सबसे अहम चीज़ है वो मनी या फाइनेंशियल मैटर नहीं है। ओके अगर किसी बच्चे के पे स्माइल आ जाए, या कोई शख्स जो है वो चल सकता है, देख सकता है, राइट I think for as a nation, as a humanitarian, no cost should be considered। Yeah, Wow. I agree with you. तो ये Totally agree. तो यानी नवी तो यानी कि जो इंसान का जो जिस्म है उसमें दिमाग और दिल बहुत ज़रूरी है। तो आपके ख्याल में
like as a scientist, आपको क्या लगता है which one is more necessary या more important than the heart? आपने तो ये अरस्तु वाला फिलोसोफर वाला क्वेश्चन कर सवाल किया। मैं दूसरा क्वेश्चन आता है इसके बाद। देखिए आपके हार्ट का जो 20% खून है 20%, it actually goes to your brain। जी। इससे ज़्यादा हार्ट अफोर्ड नहीं कर सकता और इसी पे आपके ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है। राइट, सो इट कैंट फंक्शन ऑल द वे। सो बट सीड ऑफ इंटेलेक्ट बाज़ दफ़ा वो सोर्स है ब्रेन के फंक्शन की, इस in philosophy is considered to be your heart। और कुरान ने भी जो है ना इसको seed of intellect कहा है, फवाद का लफ्ज़ है जो कि your sinoatrial node, this is where heart's pulse is generated। Because it's the provider, it's the giver, the gratitude is paid to heart in most philosophical and many religious teachings as well। But without your brain, your heart can function all it is, you're still dead। Right? So you are just a corpse and that doesn't move। So I think it's really a combination of both of these that runs the entire machinery। And so I think in the olden time people were trying to figure out how does brain work। So Warren Galen he used to work with gladiators। So when these guys would get banged up and they will be brought to him mostly half dead or almost dead, तो वो skull को खोल के वो feel करता था। He would touch certain parts of the brain, the feeling sensation comes from here। And if it's a hard part, it says, it's muscle strength comes from this part of। But since then we have learned the brain is highly integrated and all things have to work together। But then the brain also has to work with the heart to be able to really get the maximum। आप देखिए कि आपके एक brain cell को उतनी ही एनर्जी चाहिए per body weight जो एक एयरबस को चाहिए होगी। Wow। Right? So that how much energy and your heart is doing its job। And that keeps your brain going। So I think it's the demarcation as to which one is important, they are both essential to each other। तो जब आप कहते हैं जब ये आदमी जो है यानी कि जब इमोशनल हो जाता है तो वो कहते हैं कि यानी कि तुमको जो हार्ट से जो है यानी कि डिसीजन नहीं लेना चाहिए, दिमाग से लेना चाहिए। Why is that time? So again with heart you have really adrenaline pump। People normally don't make decisions from their heart। It's actually the brain at the end of the day। But sometimes what happens is that people say I have these gut feelings, right? Yes। But you know that you actually have more brain cells in your gut than your brain। Right, okay। So your sympathetic and parasympathetic part of the brain in your all over, they're also functioning like a brain cell। And then the other reason that I thought that it's very difficult to separate them, because your heart is also like a brain cell। They are excitable cells, they generate electrical impulses very much like your brain cells do। So actually they have properties that they share and they are essential for each other, but most of the time you really make decisions through your brain। But what happens is that for sometimes for your hard drive to work, it needs extra power। Right? So the adrenaline from your heart will end up pumping extra blood to your brain। Right? तो आपका दिल जैसे धड़केगा वो आपका brain को। But sometimes that excessive blood that floods your brain also paralyzes it। Yes। So when you have either fight response, flight, or you freeze। So when you're frozen, everything is functioning but your brain is stunned। Right? So many a times when women who are sexually abused, the judge will ask them the question as to if you were really awake, tell us how many tiles were on the ceiling। And she can tell exactly how many tiles, but she couldn't do anything। Right? So she is really frozen। And what happens is in those cases is your brain is not able to function at all because of fear or because of other elements।
Yeah, that's right. So we are like, I know let's take it a little bit towards the little अब resolutions बना रहे हैं सब लोग, नया साल शुरू हो रहा है, resolutions है कि okay, I'm going to be healthy. That is the first. I'm going to diet. I'm going to be healthy. I'm going to be fit. So just for our viewers, just talk about that, how important it is to exercise, because that is so important for your brain. So just put a little bit of thing on that, so that people should be aware that you're not exercising only to get thinner, it is very important for your brain also, all the oxygen. So that I want to I think it's a great question. जो नए साल के रेजोल्यूशंस हैं उस पे तो मैं ये कहता हूँ कि कितना मुखलिस गुनहगार हूँ यार, अब तेरी रहमत के गीत गाता हूँ, तौबा करता हूँ रोज पीने से, तौबा करते ही भूल जाता हूँ। तो रेजोल्यूशंस तो आपके हम लोग फौरन ही भूल जाते हैं, लेकिन देखिए जो एक गुड हेल्थी एनवायरनमेंट है, स्पेशली जैसे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज व्हाट इट डज इज दैट इट एक्चुअली बर्न्स द फ्री रेडिकल्स which are toxins not for your brain but for all tissues, and that's how the cancer comes to being. अगर आप डायनासोर्स को देखें या ममीज को देखें तो आपको कैंसर के निशान नहीं मिलते। That's only few hundred years old disease जो हमारे साथ लग गई है, and it has to do entirely with our lifestyle and what we eat. So if you think about Japanese, their calorie intake is 2,600. They have lowest incidence of cancer. In North America, we have 3,800, and then Scandinavians, they have the highest incidence. Whenever you have these calories, they break, they produce free radicals, and if these radicals kick around, they will cause oxidative DNA damage. So when you do exercise, you actually burn this fuel, which is burning you internally. And then also I think it gives you a sense of good feeling. You have endorphins that are released, and then after that you relax. And in some cases it almost becomes addiction. Right? You cannot really sleep unless you have exercise. So it provides you with a nurturing environment. It allows you to spend time with yourself. It allows you to really think, and it also allows you to get active. So that allows your blood circulations to improve, and the cardiac function, when it improves, your brain function improves. So हम सबको ये बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज जरूर किया करें, लेकिन कोई हमारी बात सुनने तो नवीद भाई अभी जैसा दौर है आजकल, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि आप अभी फ़ोन लेने जाए तो आपको 8 gigs तो आपको ऐसे ही दे देंगे। तो अभी हम ऑफ कोर्स अभी जैसे नए रूल्स अपना रेगुलेशन भी आ रहे हैं कि डोंट टेक्स्ट और ड्राइव और डोंट टॉक एंड ड्राइव, तो ये अपने सेल फोन का कितना इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे? सो अभी एक हमारे यहाँ हाई स्कूल का स्टूडेंट था, तो वो कह रहा मैंने रिसर्च करनी है, तो करनी है आपके साथ। अच्छा। तो उसमें वो ब्रेन सेल्स को जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो सेल फोन के जरिए जो 5-6 घंटे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, we have created a chamber in which we will create those radio frequency, and we will watch brain cells and how they grow, or whether they don't grow or they don't connect. लेकिन देखिए ये कि I mean you know that आपकी intelligence में देखें तो you have really your IQ, which almost everybody has, even animals have it. हमारे medical school में जब आ जाते हैं तो हम कभी उनको GPA नहीं देखते, grade point नहीं देखते, उनकी division नहीं देखते, percentage नहीं देखते. It's simple fail or pass, because your IQ that allows you to score high marks is already there, and it has been determined and put in the box. अब उसके बाद आपकी social intelligence आती है, then emotional intelligence, and only then you get the spiritual intelligence, right? So when you have really climbed all these ladders. So the problem with cell phones and the activities हर वक्त जिनके पास होती है, you actually start to lose social intelligence. That affects your emotional intelligence. And that eventually will affect your spiritual intelligence. Wow. So instead of connecting to the higher being, you connect to a lower being that you have created yourself, right? So आपकी जो है ना फिर लोगों के साथ भी ताल्लुकात हट जाते हैं. So you really become I would say, going towards a
de-evolution Yes. of Yes. the human evolution ladder Mhm. that we worked for millions of years to climb up. Wow. Yeah. What would like you know, What what a- a, like you know what a setback, isn't Yeah, what a setback, yeah. It is. I mean, you see your children these days. it? Yes. Yeah. Yeah. They have no social and emotional No, intelligence. no, They no. have no apathy, no empathy. No, They just, are busy playing Yes, with their yes, yes. with their gadgets. So what it is doing is that it's actually focusing your brain onto one particular task, Right. an immediate reward, an immediate pleasure, immediate, yeah. and then also, even if you get killed in a game, it doesn't matter. It doesn't Yeah. matter. So it actually takes away the human element Element. and the human aspect that made us superior to primates. Wow. So I think, when you see many of these traits in primates, and I see these children, honestly, Yeah. I see no difference. Yeah. सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब देखिए ना, आप जिस तरह आप करते हैं, ये सारी आपकी डिस्कवरीज हो रही हैं, तो दिस हाई स्कूल स्टूडेंट wants to do this, okay? So as soon as you find out what it is doing, will it make any difference? It is published and then people come to know about it. Will it make any difference, like the way we are addicted, our children are addicted to it, and because the older we are, and then we also feel कि हम लोग तो बिल्कुल बेवकूफ लगते हैं इनके सामने, हमको भी थोड़ा बहुत जाना चाहिए, तो हम भी फेसबुक एंड ट्विटर एंड इसमें, तो how it's going to impact, like what is the future, what do you see? I think, we are already heading towards machine learning. Yeah. Right. And, so I think our children are becoming machines. बिल्कुल, Right? Yeah. yeah, And recently they set up whole system of machines where machines learn from each Yeah. other. right, But it turns out that after a while, these machines started to create a language that humans could not understand. understand, Mm-hmm. So they say C-U-T cut, B-U-T but, P-U-T put, but not put, yeah, right? Mm. So they said this doesn't make really any sense, let's make a new word. yeah, But the humans who were operating these machines, they didn't know what it meant. And in the end, the machines were just developing their own language. Oh my So God. as a result, they ended up pulling the plugs because it became just too dangerous. So I think the same thing will happen to our civilized so-called society, Yeah. Yeah. where these humanoids or these kids will be like machines. Oh my So you God. will not be able to communicate with them, right? And they come now, they don't say Salaam, Namaste. No, right? no, no. Say, hey, what's up? Hi. That's Oh, right. yeah. That's right. Hey, what's up? What's happening, right? So इसकी वजह से क्या हुआ है कि the erosion of our human social skills is really extremely worrisome. बिल्कुल सही। So I think, when you think about Bill Gates or you think about Steve Jobs, they never allowed these gadgets in their houses. Yeah, can you imagine? So- Whenever I read about this, I get so upset. So they knew that Yeah. these things will destroy their family fabric. Yeah. Yeah. But they did, like a parasites, they didn't care Yeah. about what happens to other public. So I think education is really important. Even myself, when we go for dinner, the four of us sitting around the table and everybody's Has on got was on on the the phone, phones, on yeah. their phone. And so I have now made a rule Yeah. that during dinner time or our conversations, phone has to be 100 meters away. Yeah, we Leave it in have the car, same rule. leave Yeah. it in the car. And so I think, try to really do this to children, because I think it is really extremely dangerous. Yeah. And then when you become machines, you will be mechanized Yeah. like machines, Yeah. right? So, Completely. so machine learning will be one thing. Then the robots Yeah. fully in They are operation. coming out. All sorts of robots All are sorts, coming yeah, up to all do sorts. all the things. Oh. Yeah. Then you become data, Yeah. and you become a number, Yeah. Wow. right? So people will be really negotiating numbers and whatnot. So I think it's really a sad affair. So my really New Year message to people will be that it took us such a long flight and height Yeah. to get to the ladder where we became superior to all beings. Let us stay Let us Let's stay stay there. stay Yeah. there. Yeah. Let's Yeah. keep it that way. Yeah, I agree with you. I agree with तो you. नवीदा, Oh my यानी God. अगर आप देखो फ्यूचर, ऑफ कोर्स हम बात करें जैसे मशीन्स हो जाए, हर कोई यानी मशीन्स की बात हो रही है, तो अपना रिसेंटली आपको जो हॉलीवुड के किसी डायरेक्टर ने आपको रीच किया था, प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? Yeah. So every interesting story. I Yeah, need to very really. interesting. हाँ, I तो need किसका कनेक्ट कैसे हुआ आप लोग दोनों? आई थिंक इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. इस पे देखिए कई लोगों ने स्क्रिप्ट लिखे हैं
कि अभी तक तो जो $6 million man था, that was जी. pure fictional. Right. But we actually provided proof of concept and experimental evidence. Mm-hmm. So they're very keen to know those details Mhm. exquisitely, so their fiction is scientifically and futuristically credible. Mm-hmm. So they asked me to write a script for a movie that is future, right? Okay. A science fiction. Okay. So I gave them a very brief draft whereby in that society we have half machine and half human. Mm-hmm. So the entire animal kingdom, Yeah. humans to your dogs and pets, are half machine and half animal. And So for example, if your dog wants to go pee, its machine part talks to your machine part. And it Mhm. tells you that I gotta pee, I gotta go. And so then you are intuitively machine to machine connected, wow. right? Mm. Same thing is if you fall in love with a girl, Mm-hmm. the actual human part where your decision is made to your heart, Right. Yeah. right? It doesn't consider the brain. You are completely blown away, and then you want to fall blindly in love, and you Right. don't care, sect, tribes, race, Yeah. and whatever. Yeah. But your machine part will also talk to her machine part, Mm-hmm. Okay. and it will tell you that, hey, be sensible, man. He doesn't even got a job. Right? His job prospects are really bad, Yeah. and he's not going to be able to really give you all the things in Amenities. life that you really want. Yeah. Mhm. I think you should dump him. So this dichotomy actually exists in all affairs of that Mhm. society. And then my plan was to introduce aliens, because now we have the receptive capacity to communicate with others, So Yeah. when they enter our society, Mm-hmm. how do they actually see our bad habits and the Okay. bad Wow. norms of the society? So, but they promised that it will be shot by one of the top, producer in Hollywood. Yeah. Okay. I just have to find time to Okay. start writing, because you can't No, just write like this, that. Yeah. right? Wow. So you remember Jurassic Park? They Yeah. created Yes. the lab where Yeah. they actually showed. Yeah. So they want to shoot something like this, where we bring in all our chips from fabrication to design to bonding to implantation. So, and then you have really parts of the humans where these chips can get planted. Yeah. So it will be an interesting, exciting Yeah, project. it would Wow. be. Yeah, it would be. And great. right here in Calgary. Huh? Right here in Calgary. Yeah. Yeah, so Wow. it'll be fun, but again, you need to really find time. And Yes. I was requesting to get a year of sabbatical where I can just go and hide That's right. Yeah, yeah. That's right. and write it. Yeah. Wow. So, any of your kids is taking your? They said, Dad, one crazy in the family. All 3 kids of mine, and they saw their dad working like he saw like. Or a they workout. didn't see him. Huh? Or they didn't didn't see him. They none of them wanted to get into medicine. No, Oh, my, wow. my son did, and he then graduated from our medical school Yeah, he here. did. Yeah. Then he went on to do his residency in emergency. Yeah. So he is also kind of adrenaline freak. So Okay. just like me, he just goes on adrenaline. Okay. So he's an emerged doc Okay. in So Ottawa. where is he? He's in Ottawa. He's in Ottawa. Okay. So I Nice. think, but then the 2 girls, they said, forget it. None of mine. They all took science Yeah. to start with. They thought, oh, maybe now we could get undergrad, BSc, this and that. They reached up to a certain stage and they said, no, this is too hard work for us, and we never saw dad, and we get married and our children will not see. So all 3 of them can go in that field. I think also because they're millennial generation, they're Yeah. really smarter. Yeah. They know that there are no jobs in neurosurgery. There are no jobs in cardiac. There are no Yeah. jobs in orthopedic, dermatology, Yeah. ophthalmology, and even emerged radiology. These fields are really So full. getting saturated. Yeah. So they think that even वो कहते हैं ना कि आबादी डॉक्टरों की जो बढ़ती रही यूं ही घर घर सदा लगाएंगे बीमार कोई है. Yeah, that's right. So they will be looking Yeah. for patients all around. So that also aspect of job security Mhm. and good lifestyle doesn't
appeal to them. Yeah, they don't buy it. Buy it, yeah, yeah, right. Yeah, there are lots of different factors Yeah. come into play into that. Yeah, that's right. जी नवीद भाई यानी रिसेंटली अगस्त में आपको जो है तमगा इम्तियाज मिला, ऑफ कोर्स मुबारक हो आपको। Thank you. माशाल्लाह, तो बहुत आपकी उस वक्त की जो पाकिस्तान की ट्रिप और प्लस आर यू रिलेटेड टू और लाइक आर यू डूइंग एनीथिंग फॉर द आखन यूनिवर्सिटी देयर? So, I mean, I gave 2 grand lectures just in 1 year at the Aga Khan. Mhm. I mean, they have a fantastic institution. Yeah. They do really phenomenal research, and also the efforts are really, it is really one of the best in the subcontinent, there's Yeah. no question. So I recently, when I give my talk, I realized that there are a couple of things in Pakistan that are seriously lacking. One is that there is no vaccination facility. You're right. They don't produce any vaccination. They don't produce antibodies, and they Yeah. also don't produce any restriction enzymes. So Oh, if you is want that to do right? research, you have to wait 6 months for a simple antibody that I can get it within 24 hours. They have to Mhm. wait that long. So it doesn't matter how good you are, if you are relying on infrastructure and chemicals and facilities from other countries, you will always be limited in Of what course. you can really do. Yeah. So I have really put together a council which is called Canada Pakistan Research Development Council Mhm. with many other colleagues from Ontario, Uh-huh. some of the top really guns, Mhm. and we are proposing to set up a facility that will produce vaccinations and make Pakistan self-sufficient. Wow, Mm. nice. And all along the main motorways, every 100 kilometer, we will have storage facility that will have its own power generator. Wow. And the other thing I realized recently, and it's remarkable that ED set up that ambulance network, Yeah. but unfortunately those are very, very primitive ambulances. Okay. And there's no sense among our people. Yeah. Here, when the ambulance sirens, Yeah. Yes. or Very you unfortunate, hear, you yeah. just move on one Yeah. side, Yeah. and they are nobody. Actually, Yeah. people will go out behind the ambulance Yeah. That's right. because it's making, Making traffic move that's right, faster yeah, for them. yeah. Yeah. And the patient is rolling over. Yeah. कर गया बकरा Yeah. ये घर पहुंचने से पहले ही मर गया Yeah, बकरा. okay. So before the patient actually makes it to hospital, it's an irreparable condition. So what we're trying to do is to buy 50 grand ambulances, Okay. either operated through the Aga Khan Foundation or through other hospitals. And the idea will be that these will be the Canadian size ambulances Mhm. Okay. with 2 emergency doctors, fully equipped. Wow. And nice. when they come to your door, they will stay there until the patient is stabilized. Okay. Right. And then they can move them, transport them to hospital yeah. Yeah, at good. an opportune time. And because the traffic is really bad, Of in, course, yeah. Karachi, Bombay, Yeah. Delhi, it's just unbelievable. So these are the 2 projects that we are currently working in partnership with Wow, also with the great. Aga Khan. Wow, such an Aga honor. Khan. And I think it will be really transformative for these countries. Because if there is a breakout now, Yeah. I mean, forget it. Yeah. Mm. So we have started negotiations with Bill Gates Foundation. Wow. And we're requesting them 200 million Wow. to be matched by World Health Organization for another 200 million. Wow. And now the negotiations are happening with the government of Pakistan. Oh, Because right. without their consent Of and course. agreement, Mhm. none of these foundations will come forward. Mhm. So I hope that this will then produce enough vaccinations that could be also supplied to India, even though India produces its own vaccines. No, they do. And even they supply it to Pakistan as well, Mhm. so it's good Wow. sales agreement, but also to Far East and the Middle East as well. So I think these kinds of things that if we could do in our lifetime, or at least Mhm. start them, Yes. Yeah. yes, it will yes. really be fantastic for people. Population is growing like anything. Yes, yeah. And so, infant mortality rate is one of the highest Mm. in our countries because, there are no proper education or proper treatment or health care. So I think these things will really make a tremendous impact. So, मैं ये कहता हूँ कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था
अपने हिस्से की कोई क्षमा जलाते हैं। Wow, क्या बात है, माशाल्लाह. It's very, very great. And you, and of course you got the came in 157. Yes, yeah. Senate Canadian Yeah. medal. Yeah. So Mashallah. how was your experience in Ottawa? Yeah. So it was really very humbling because there are close to 500,000 people whose names get put forward, Right. and then they bring it down to 300, and then they give medal to 150. 50. And this is for 1 year each, and then the medal that the Senate gives you is actually, it's very heavy. Okay. And there is a documentary that they made for Mint Canada, Yeah. just that when it produced those medals. Okay. They are really very unique. Wow. But those medals are not given on the basis of our research or scientific, contributions, but service to society. Oh, Nice. And that is really very, very humbling. Yeah. And they declared them as the unsung heroes of Canada, who Wow. have really contributed Wow. for the greater good. Great. And I think, to pay back to my adopted mother is just as rewarding as to really do something for my real mother. Yeah. Wow. Great. You know what? Like Great. you are from from Pakistan, from Calgary, and from Canada, from Canada. So we are so honored you are So here. honored to All have right. you. Yeah. I think, your affection, your friendship, your love is the biggest reward that I could have ever Thank imagined. you so much. You have shown such a light on what you Yes. are doing and how you are doing, and I think our viewers and listeners will get lot out of it today, and they will understand better, because see, some people like to hear and they keep it and absorb it better, and there are some who don't even look at the newspapers or at the research papers, or there are lots of them like that. But by listening to you and watching you, I think today you have really given them the real what you are and what you are doing. And then we are very happy to have you, and so this has really made a Well, I difference. think, for your listeners, for two of your sake, if there are groups of people who would really like to visit us, I would be happy to. Yes, to give that's what I was them- going to ask you. Yeah. Yeah, give them an exclusive tour of our facility, and then they can see firsthand. Yeah, we should go with We our should, thing, and then we can We show do it live up. from there too. Do a draw, Yeah. or something. Yeah, It's, that would be great. Wow. Yeah. And Naweed, of course, आप जो है social media, what do you say about social media? Because I know you are very busy on it. Well, I think, you also think that I post all the time. Yes, that's what I think. Yeah. Actually, I have my machines. So what these machines do is that if you posted something about Trump, and it will automatically know that I have to reciprocate. And so if somebody painted, something about weather, then automatically take a nice, picture of the weather, and it will add a quote to it. Okay. So I can just feed it on. So I'm sitting here, it can actually does it by itself. Yeah, that's good. Yeah. तो of course अभी आप हम जो बात करते हैं ये जो है आपकी मूवी के बारे में जो aliens. So is there any aliens around? आपको क्या? Well, there definitely are. There is that right? Yeah, do you believe in Oh, it? absolutely. The life. Really? Oh, absolutely. Life exists at other planets too, right? Why? And if you read the teachings of Imam Jafar Sadiq, he said very explicitly that like ours, there exist other planets, and there also life exists. Wow. We don't know them; they don't know us. But a time will come when they will meet with us, and we may have communication problems, but the technology would have been advanced so much that we will be able to live together. तो फिर तो हमें वापस आना पड़ेगा। आपने तो वही बात की, वो जो इंडिया के बहुत मशहूर शायर थे कुमार बाराबंकी, तो वो गर्मियों के ज़माने में वो अमेरिका चले गए, तो वहाँ पे उनको अब शॉर्ट स्कर्ट्स और हर चीज़ें देखने को मिली। तो किसी ने पूछा कि खुमार साहब आपको यहाँ आना कैसा लगा? कहने लगे भाई मैं गलत उम्र में सही जगह पे आ गया। चले मैं एक जोक सुना दूं। Please, Okay? please, हो जाए। आपने एक बात की तो 3 लोग, एक जरा बुजुर्ग टाइप के, और इसके जैसे आपके इस बात पे मुझे ये जोक याद आ गया, और दूसरे थे वो उनके बेटे और उनके पोते,
तीनों जा रहे थे बीच पे। तो जो बड़े साहब थे वो पुराने जमाने के, तो उन्होंने देखा बीच पे बड़ा अच्छा समा था, तो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह करते करते जा रहे थे। तो जो उनके बेटे थे उन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, जो उनके पोते थे वो कहने लगे इंशाल्लाह। तो आपने वही बात करी कि गलत उम्र में सही जगह पे आ गया। मगर देखिए यही कि आपने बीच से बात की कि थोड़े सा मैं भी फिलोसॉफिकल टच देता हूँ अपनी तरफ से कि लोग कहते हैं कि इतना पढ़ना, इतना लिखना, इतनी एक्टिविटीज, क्योंकि आप कभी भी जब I read 6-7 newspapers every day, right? I spend at least 1.5 hours reading something very like me, I do that. So I believe that a person who doesn't read is no better than person who cannot read. उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। सही बात। तो उसमें यही है कि मैं साहिल समंदर पे पहुंचा, समंदर उतरा हुआ था, मैंने साहिल समंदर पे कुछ सुतूर लिखी जिनमें मैंने अपनी अक्ल, फहम और फरासत को समो दिया। उसी शाम मैं अपनी लिखी हुई तहरीर की नोक पलक ठीक करने जब दोबारा साहिल समंदर पे पहुंचा तो समंदर चढ़ा हुआ था। मैंने अपनी जहालत के सिवा कुछ ना पाया। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोला आपने, सही बात कह रहे हैं। और मेरे मियाँ कहते हैं ये अब तुम ये न्यूज़पेपर में बंद करा देता हूँ। मैंने कहा जिस दिन आपने न्यूज़पेपर बंद कराया मैं सुबह उठना छोड़ दूंगी, खाना पकाना बंद। नहीं मैं उस दिन सुबह उठना छोड़ दूंगी। क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे 2 चीज़ों की जो आदत डाली थी, और मेरी माशाल्लाह से मेरी स्पेलिंग और मेरी वोकैबुलरी उसकी वजह से अच्छी है। एक ये कि वो रीडर्स डाइजेस्ट का वो आता था वर्ड पावर, राइट, वो मुझे रोज करना पड़ता था जब भी वो रीडर्स डाइजेस्ट लेकर आते थे और न्यूज़पेपर। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने ना न्यूज़पेपर बंद किया और ना मेरा वर्ड पावर गया। और माशाल्लाह से आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय डैड दैट हु गेव मी दिस हैबिट। आपने वो भी देखा होगा लाइफ्स लाइक दैट जी, उसमें जो रीडर डाइजेस्ट जी 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 बिल्कुल all in the days, yeah, you know. all in the days of, yeah, I used to love, हमारे घर वो it was a must that we all should go through that nice articles, word power and all that. अब किसी को टाइम नहीं है ये सब चीजें करने का, कोई न्यूज़पेपर को टच भी नहीं करता, सही कह रहे हैं, सिवाय मेरे और मेरी मियाँ के कोई हाथ नहीं लगाना चाहता न्यूज़पेपर। हाँ पढ़ लिया क्या, we will go through our cell phone, उसमें से कर लेंगे। It's not the same thing. That's very true. It's not the same thing. Very you true. spend time, you read, and then they ask me, how do you know about all this? I said, I read newspaper. Yeah. It's important to do all these things because then that's social communication. सही कह रहे हैं। Yeah. वो मेरे नाना वो कायदे आज़म के भी उस्ताद से सिंध में कराची में 17 साल वो प्रिंसिपल रहे, तो वो कहते थे कि ये स्टोरी अखबार में तुमने पढ़ ली है जी, अब इसके बाद इन लफ्ज़ों को काटो और काट के वो टेबल पे रख देते थे, कहते थे इससे तुम स्टोरी अपनी बनाओ। That was really the jigsaw puzzle and that kept us really busy. तो उसी से देखिए क्रिएटिविटी आती है and then that is reflected throughout in your life. बिल्कुल। अच्छा नहीं ना, यानी 2 more question है, आपकी बात से बात निकली तो आपने कहा कि ये जो कैनेडियन में जो हमारे जो कैनेडियंस हैं उनकी लाइफ एवरेज जो अभी बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि हमारा हेल्थ केयर अच्छा है जैसे आप कह रहे थे, लेकिन बट इफ़ यू कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो अपने वेल डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें हम अभी भी नीचे हैं, व्हाई इज दैट? देखिए कनाडा में तो अब men are almost I think 78 right. and women are hitting 84. Yeah. तो कहते हैं जो बच्ची आज पैदा हुई है वो 100 साल की होकर मरेगी। Right? So हमारी longevity है ना, that's actually increasing and Canada is really going to suffer enormously because we have these baby boomers almost hitting the retirement age and we are not producing enough children to be able to sustain. अब जो है वो मैं जो हूँ वो आपके किसी बुजुर्ग की जो है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कह लें या आपकी पेंशन है वो पे करता हूँ।
आपका बच्चा जो है मेरी पे करेगा, जी right? So we have an integrated system where we contribute to. Right. But if there is not enough population, you won't be Yes, able to yes, sustain it. yeah. So healthcare system is really good, and Canada is doing very well. I think we are very healthy. Alberta is the healthiest. Yes. They are most educated, and they are most prosperous in the world, right? Mhm. आप quality of life को देखें, standard of living को देखें, आपकी opportunities, wilderness. It Yeah. takes you half an hour to be in the mountains, That's Yeah. right? So we have really a fantastic life. So it doesn't matter how long you live, but Yeah. how you live. How you Exactly. Some people Okay. live very long lives, but Right. they actually live very little. Right. Yeah. I know what you're saying. Yeah, yeah. Good point. Good point. Yeah. So I think, still we are doing better, but in the olden time, our Prophet Nuh, he lived 950 years. Yes. 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 I don't think I really want to live. George Byrne, when he turned 97, and he said, I just realized something. At my age, when you realize something, that is something. Yeah, That's right. yeah. This is, see, if you are healthy and you can live independently by yourself, and you are active, your mind is active, your body is active, I think then the chances of depression and all the problems are less. So this is what people have to understand, that if you're not living properly, that is very important, properly, like you're not eating healthy, you're not exercising, you're not active, and all these things, then if you are, I've seen people who are 80, 85, 90, and they look so great because they are leading a proper and healthy life. यहाँ के देखिए, यहाँ तो Yeah. 80 साल में जो है ना, वो मर्द चौथी शादी कर रहा जी होता है। बिल्कुल That's सही right. कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो पहली शादी के बाद ही नहीं बेचारा बचता। न्यारी और पाए और वो सब क्रैक कर। और हमारे यहाँ बच्चियों को भी ये कहा जाता है कि मर्द के दिल का रास्ता जो है, वो खाने से, वो उसके पेट के, उसकी मैदे से जाता है। Yeah. So keep him happy and keep him Yeah. healthy. Healthy. हजरत अली का भी कॉल है कि अपने मैदे को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाओ। सही बात है। Don't consume so much meat. Yeah. And eat healthy, vegetarian. Eat vegetables. एक वो बढ़िया थी, उसका 128 साल की, तो उसको फ्रांस में इंटरव्यू हो रहा था, मैं ज़माने में वही था, तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है? तो कहने लगी कि मैं जो है वो सैलड खाती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, तो वो बताती रही मैं सूप पीती हूँ, तो वो लोग बोर हो रहे थे मीडिया वाले। हाँ। फिर वो एकदम से कहने लगी, हाँ मैंने सिगरेट छोड़ दी थी। तो वो कहने लगे कि when was that? So Wow. excited. एकदम चौंके। कहने लगे about 2 years ago. So if you don't smoke or drink or overeat or womanize or manize, you may not live longer. It might just seem so. Yeah. आपकी जिंदगी इतनी dull and boring होगी कि आप समझेंगे कि आपने बहुत लंबी उम्र गुजारी। सही कह रहे हैं। Healthy, balanced lifestyle. Yeah, and everything has to have a balance in your life, and then you can enjoy life. Okay, last question, Naweed bhai. Is there any life on Mars? Well, on Mars, I don't think there is any life, Uh-huh. right? So, and they have recently also discovered that it doesn't seem like that there is water. Water Okay. is essential, and there is some kind of a liquid, but it's not water. But I think they have found another planet that is like ours, and that may have life on. Wow. And recently, you saw the Americans' fighter jets were roaming around an extraterrestrial object, and they were saying, "Oh my God, we have seen it. It's here. It's flying around." Those saucers are not here, right? But I think life definitely exists. Life existed on this planet before us. Yeah. And when the angels were asked to bow down, they refused, and they said, "Okay, you are creating a race that will shed blood." And the angels are not supposed to know the future. Yeah. So their really conclusion was drawn from what they saw. There lived another race, which was jinn, and the giants who lived before us, and they created bloodsheds, and eventually they were eliminated. So Shaitan was actually one of such. He worked so hard and worshipped so much that he
seated all the angels and became their head. Yeah. But he was a jinn too. So, you know, again, absence of evidence is not the evidence for absence. Yeah. Absolutely. I rather have somebody that I can search for Yeah. than to just say there nothing exists. So I will always keep the door of provision open so you can see through that window that Yeah, we to put your in our tip chicken. window, yeah. Wow. तो अपना नवीन भाई यहाँ पे बहुत से मैसेजेस हैं, when you go home so please check out. मैंने कहा यहाँ पे अहमद साहब भी हैं, हुसैन भाई भी हैं, अकबर अल्लाह खान ने, there's तारिक खान साहब है, हुमैरा फलक तारिक खान, there are so many बहुत सारे messages. लोग आपको So सुन much. रहे हैं। Thank you. So, और बहुत मैं एक शुक्रिया. बात कहती Yes हूँ। please. हाँ, how much? नहीं टाइम है हमारे पास 15 मिनट. लोगों ने जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, जब आप लोगों ने इनके बारे में देखा होगा कि कोई साइंटिस्ट आ रहे हैं, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसाइंटिस्ट, जो भी ये लोग आपके बारे में सोच रहे होंगे, बहुत लोग इन्होंने लाइक दे डिडंट नो कि ये क्या ड्राई टाइप की टॉक होगी और बड़ी बोरिंग होगी आफ्टर दैट गजल प्रोग्राम, यू नो, एंड पीपल, लेकिन आई एम टेलिंग यू डॉक्टर नवीद, लाइक वी thoroughly enjoyed it. Yeah, आपकी शायरी बीच में, आपके jokes, आपकी बातें, the way you were explaining, and I'm telling you viewers, this was the best talk after a long time we had with him, and thoroughly enjoyed. I know I enjoyed more because of my medical background, but I'm sure everybody else must have enjoyed it. I was asking the questions to your level so that I wanted him to tell you according to that level so that everybody could enjoy it, and we thoroughly enjoyed your talk, and you were just so amazing. Oh, you're very kind. Yeah, really, I'm not joking. Like, you know, like if somebody else was sitting there and who didn't know the way you were explaining, the way you were saying things, I think it was amazing. I really enjoyed it, and hope all of you enjoyed it. Because these kind of talks are so informative, and as the way we are living in this society, in this advanced society, we all should know about all these things. So thank you so much for spending such a precious time of yours away from your family and your work to be with us. It's a great honor for us. I think you and the audience are also part of my family. Thank you so much. I didn't feel that I was away from home. Yeah, thank you so much. Thank you for having me. Really enjoyed it. No, thank you, sir. जी बहुत बहुत शुक्रिया. You really enjoyed And it. we were, I know, yeah, we were like, we were working for a month or two आपको भी लाने का, but it all depends, you know. आप इतना busy life है तो अपना, of course, thank you so much. No, I think we will go this time to his. Yeah, we'll go inshallah. And take a tour and take pictures and a video, and then we will tell everybody about this. I think if your audience, you know, is still talking to you after this program, then you can draw. You can see from the comments. Yeah, so you can actually draw and bring in 10, maybe up to 15 people, and we will give them an exclusive tour of our robotic facility, and then also to really our facility, where we can show them that you can actually now fly drones by just thinking about them, or control a car. So they will really never forget this, and like me, they may not be able to sleep that night. Nice. चलो, बहुत शुक्रिया नवीद भाई. Thank you so much. Oh, so we are about 3-4 minutes. Yeah. So we'll say goodbyes. Yes, and then so we'll take pictures and everything. So कहिए कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम, और अगले हफ्ते भी हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, और प्लीज हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको किस तरह के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं. तो हम इस तरह के गेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, और बीच बीच में आपको अच्छे गज़लों वाले और मुशायरे वाले प्रोग्राम भी दिखाते रहेंगे. तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और हम आपसे फिर अगले हफ्ते इसी तरह मिलेंगे. No, we'll be back after commercial break. No, we'll be back after commercial break. You are going for a commercial break? Okay, हम अभी आते हैं. जी, और फिर हम ये नवीद भाई को अपना जो खुदाफिज कहते हैं. जी बिल्कुल. तो guys, yeah, he is the only Naweed, Dr. Naweed Syed in Calgary, और हमारे लिए ये बहुत ही जो है ऑनर की बात है कि he is, you know, live in studio, और होपफुली आपको इनकी जो बातें हैं आपको मज़ा आएगा. इट वाज ऑल, यू नो,
कि इतनी बोरिंग यानी कि नहीं थी, जैसे वो अपना सलमा जी कह रही थी कि बड़ी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग थी बात है, साथ में जो है नवीद भाई की जोक्स वगैरह भी चल रहे थे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी जाना कि जो आपको जो फ्यूचर जो आ रहा है, जो हमारे बच्चों का जो यानी फ्यूचर आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूरा मशीनी सब होगा, तो आपको किस तरह हैंडल करना है। ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू गाइस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक जो छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। नहीं, अल्लाह हाफिज़ नहीं, खाली ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, लेट मी पुट द कमर्शियल ऑन। ओके बाय गाइस, ये हमारी लाइव अब बंद करते हैं। थैंक यू सो मच। वाह नवीद भाई